Hello and welcome back to Chasing the Target. In this episode, we'll be previewing the match between India versus Bangladesh, the second one-day match, a crucial match for both teams, especially for India. If they lose this game, they lose the series. Bangladesh will be eyeing for a historic series win after that magnificent first one-day. I have with me Mr. Faisal. How are you doing, bro? Doing good, doing good. Still trying to get over the Mehdi fiasco. But yeah, I mean, with time probably it'll heal. Which is tomorrow if we don't put on a bad show, which is like what we expect from India to come back and pounce back on the Tigers. But let's see. I mean, Bangladesh look well prepared. They're at home. They feel comfortable. They feel confident. Probably much more confident with the Mehdi sort of pulling it all to the wire. So it's going to be an interesting match. I think I know I just want like I feel like there are not going to be much changes to see probably team wise. Maybe we can see like a Tuscan coming in because he was injured initially, or maybe like a Tamim Iqbal. But yeah, we're just waiting to see what's going to happen tomorrow. Yeah, talking about that, let's go into a fresh off the press and see what the latest news is surrounding the series. So this is our fresh off the press. पहली खबर ये है, maybe you can shed some light on it, but India is sweating on Akshar Patel's fitness because they want him in the team because he'll give you those turnovers on pitches like these. His quicker balls, if they turn as well, will cause problems for the opposition. And with the bat, he'll bring you more stability and probably has more experience, a stronger position than someone like a Shahbaz Ahmed. So yeah, any news on that? Yeah, I mean, it looks like he's not keeping well at the moment, but like I think he would be a crucial part, play a crucial part in this. Akshar Patel, matlab, he can obviously get those, arm balls and sort of skid off the pitches that like we see usually Jadeja get. So already Jadeja has been withdrawn, which is a big gap, and Jadeja has been injured for quite a while. But Akshar Patel can come in, provide runs with the bat. Hopefully, even agar upper ke order chale gaya, he's someone that you can depend on getting with at 20-30 odd runs. But yeah, I mean, injury is becoming a very big problem, and like we've been speaking constantly that fitness is the key to this. Even like though Akshar Patel is very thin, but when it comes to match performances and stuff, it's probably a little too skinny for me. But yeah, I think these boys really need to work on the fitness. There's also news that, for example, if Akshar Patel is not fully fit, there's news that they might drop Shahbaz Ahmed and bring in an extra batsman. Your thoughts on that? Someone like Ishan Kishan or Rahul Tripathi. Would you like to see something like that and try to strengthen the batting? Because जो तीन ऑलराउंडर खिलाए थे पहले मैच में, उसमें उन लोग वो बॉल के साथ ठीक ठाक परफॉर्मेंस थी, मगर बैट के साथ उतना मतलब नहीं कर सके कुछ भी. Yeah, I mean, last match के हिसाब से अगर अपन देख रहे तो yes, definitely it would obviously be good to get an extra batsman. Ishan Kishan dependable batsman भी है, and he is someone who is not had has not had quite bad tournaments recently, and I मतलब उसको drop करने का भी कोई sense नहीं था, but चलो कोई नहीं. अगर India go with this for mindset that they want to get an extra batsman just to sort of get a better a bigger total, then yes, I would certainly back that because you can you have Siraj who's in form. You have, I mean, bowling उतनी बुरी भी नहीं थी because 180 के chase में अगर अपन we brought it down to the wire, so the bowling is good. Shardul Thakur did bowl well, Deepak Chahar did bowl well. No one got smacked so much. So maybe if you're taking out a Shahbaz Ahmed and replacing him with like the Ishan Kishan kind of a player, yeah, I wouldn't mind that actually. To see that, it would be interesting, provided we get good amount of total on the board. अगर you have to choose between Tripathi and Ishan Kishan, who would you choose? Ishan Kishan, I think for me right now, because he's much more mature in this Indian cricket side. I mean, yes, you have to give your chance to Tripathi. I wouldn't say ke nahi, but yeah, for me right now, Ishan Kishan would be the better considering KL Rahul's drop.
Yeah, I think it's a tough call for you because you're a huge Sunrisers fan and Tripathi plays with the Sunrisers, so you're probably backing him. But I think what you mentioned there is crucial. He provides keeping also, Ishan Kishan, and in that way, he can probably keep wickets if he does play. He gives you that extra option, and KL Rahul can stick to the fielding. And look, KL Rahul will improve on his keeping. I'm sure the more games he Yeah. plays. So if he does play as a keeper, hopefully he does take catches and he does improve on his keeping. But yeah, I think Ishan Kishan provides you that extra advantage in that Yeah. sense. And you were talking about Taskin Ahmed coming in. What I wanted to mention was Ibadat Hussain. I was reading actually an Hmm. article on Quick Info, and Ibadat Hussain was actually brought in as a test match player. He's played 17 tests because of his extra pace. He bowls at 145. He can bowl close to 150 clicks. But since that Zimbabwe series, he's improved in his accuracy. In the white ball, he wasn't accurate. If you noticed still, he bowls that all odd ball down the leg side, and he doesn't stick to a line length. Magar jo performance diya unhe against India, these are positive signs for Bangladesh that they have a backup to Taskin. You know, Yeah. they started this fast bowling thing from Mushraf Murtaza, then they got Rubul Hussain, and then Taskin, and now Ibadat Muntafur, yeah. Hussain is Yeah. providing this. And if you remember in Test match in New Zealand, the famous Test match that Bangladesh won just last year, I think. Yeah. In that one, Ibadat Hussain played a crucial role, but he never translated that to one day. So do you think now he's getting that experience or like Jamra one day format? Yeah, I guess I mean थोड़ा बहुत क्रिकेट अगर अपन like continuously उसको चांस मिलते गया इबादत हुसैन को and like his you just grow with experience. I think वही है उसके लिए probably in a test match तुम्हारा mindset better रहता कि yeah 5 days, and usually it's like a slower format when it compared to an ODI. So I think उसको थोड़ा time लगा वो adjust करने में. But yeah, I mean इबादत हुसैन how he bowled last match 4 wickets, sensational bowling थी वो, and uh, like it is actually a good variation when you have Mustafizur, who's usually on the slower part of the pitch. So a left hand right hand combination, which again will replace Tuskin. So yeah, Ibadat Hussain is showing signs of growing, but yeah, I mean abhi tak nahi bol sakte abhi next one day aane ka hai, and provided that abhi Kohli, Sharma and fire nahi kare, I won't give it 100%. Yeah, but there is signs that he's gonna be one for to look out for. Yeah, you talk about Mustafizur. I don't know if you remember 2015 World Cup ke baad India had toured Bangladesh. And Hmm. at that time, the Bangladesh fans were waiting for India because 2015 World Cup, mein wo catch, no ball, and all the controversies were happening. Drama. They're very upset that they lost to that match against India. And then India came there and they lost the series 3-0. And Mustafizur was the one who shone. He took a 5-4 in the first game, if I'm not mistaken. And Yeah, yeah. he put constant pressure. Abhi, it's a different Mustafizur. He changed his action. Thora action ke saath problem tha, injury bhi tha. But he's still providing that economy. He's stifling opposition. Yes, maybe at that time उन्हें नया था तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था. They're not giving wickets to him now, but he's still a force to reckon with, and his economy is very impressive. Yeah, I mean, it is something that's like shocking because given his speed, I mean, उतनी ज़्यादा speed पे भी नहीं डालता. He's like a Sam Curranish kind of a bowler. But his, he has the ability to hide the delivery. He doesn't bowl the same, ball constantly. He knows how to hide the slower one. He knows how to bring it back behind the, arm and stuff like that. So, उसकी variation timing अच्छी है. He knows exactly his strengths and he plays according to that. He doesn't try to, experiment a lot. He doesn't try to, bowl shorter ones, this one, that one. जो आता भाई मैं वही डालने वाला हूँ, उसके ज्यादा मैं कुछ हैंकी पैंकी नहीं करने वाला. I think that's what the Fizz, what we Sunrisers usually used to call him, the Fizz. He was something amazing. Even a T20 format we saw him. Yeah, कभी लगता था उसको भी, कभी मारे तो बहुत बुरा भी मारते. But the usual outcome would be that he would give you 4 overs and an economical run rate. और उसका एक कटर था स्लोअर बॉल याद है, लाइक पता सनराइजर्स है. में भी जो कटर और यॉर्कर भी. बट आई थिंक इंजरी के बाद वो जो एक्शन का इशू हो रहा था विद आईसीसी, आई थिंक उसके बाद वो थोड़ा पेस कम हो गया था उसका. ही वाज एक्चुअली बोलिंग क्विक ड्यूरिंग सनराइजर्स टाइम, हाई 130s 140s. नाउ वो Yeah. ड्रॉप हो गया, यू आर राइट. तो बट ही इज डेवलप्ड, दैट्स व्हाट यू वांट टू सी, राइट? कि लाइक इवन इफ यू लूज पेस, समवन लाइक Zaheer Khan, he lost pace, he went out of form, but then he came back, and that's what you're seeing from Mustafa. He's coming back, उन्हें नए टेक्निक सीख रहा, like he's trying different things to keep the opposition guessing, because they will start to pick a slower ball. So he's doing different things now to be within in that competitive nature and always try to challenge the opposition. Yeah, 100%. I mean, yeah, it's about. I think the best thing is not to get sidetracked, not to get after an injury, coming back from an injury, you sort of, if you lose space, you as a bowler you would feel bad कि भाई मैं एक time पे ये डालता था अब ये डाल रहा हूँ. But I think he worked that into a strength. He made his bad apple a good apple, and that's a very big, good sign of maturity, and that's something that a player should obviously be mentally strong, and it's a very good comeback from him.
Yeah, 100%. And we mentioned Saqib Al Hasan as well. This guy is having an outstanding series so far. Just the one match, but actually, he. I was looking at his stats and everything. He has the second most man of the matches after Sachin Tendulkar. That is Yeah. insane. I think that's all for match, but that's just insane, man. And if you remember 2019 World Cup when New Zealand came against Joe 100, before that they were saying he shouldn't be in the 11, but number 3 पे आके 100 mara. And with the ball, he's bowling really well. If you notice, उसको भी shoulder injury हुई. He's not turning the ball as much, but line and length, stump to stump, and he's changing his pace. Even though if he's not getting the ball to turn too much, that change of pace and he's letting the pitch do itself. And one thing, if you see in one-day cricket since 2006, his role has been the same. Come towards the end of the power play and bowl the middle overs. In T20 is a bit different. कभी power play में, कभी death overs में भी करना पड़ता है. मगर यहाँ पे उसका जो role है, it's a very subtle role, and it's going to be difficult for Bangladesh to replace him. But right now, with the World Cup coming in mind, he's going to be a crucial player. Yeah, 100%. I think उन्हें अगर wickets नहीं लेता, but he's always that one guy who helps to sort of control the power play or ज्यादा runs नहीं देने वाला. He's one of the stabilizers in the team. तो वो बहुत जबरदस्त bowling option है. If you have a bowler who can, if not get you the wickets, at least protect your runs and not give away too many runs. So Shakib Al Hasan is a very pivotal role in that aspect. Also, apart from that, we've seen some amazing innings from him. He has always stepped out. Captain भी जब था उन्हें, he provided with the bat as well. So I mean, overall complete player है. I mean, I didn't know that उन्हें he was the second in the world to have overall formats man of the match. It's a big thing. I think considering his age right now and from how long he's been playing, he's probably the most experienced player in cricket at this point of time. Yeah, that's a very good point, and it's good to show that he's still, being consistent. He has his issues off the field and on the field in terms of temper and everything, but there's no doubt that he's very talented, and he's the main man in this Bangladesh team. He's the glue, and he's the one who can get everyone else going as well. So, credit to him for that. Let's move on, Fez, and we'll talk about our fantasy chips and tips and the picks for tomorrow. You ready for that? Yes, sir. Bring on the chips. पहले चीज सॉरी हम लोग थोड़ा जल्दी स्ट्रीम कर रहे हैं आज काम है शाम में सो लाइक वी हैव सम मीटिंग्स टू अटेंड सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग अ बिट अर्ली होपफुली वी कैन go back to our natural timing later on, but whoever is joining us, make sure you like and subscribe, comment with your questions and your comments, whatever thoughts you have with this game or cricket in general. Even if you want to talk about football or food, we can talk about that. But Fez, fantasy picks for tomorrow, एक एक दे दो एक टीम से, मतलब दोनों टीम से एक. मेरे लिए आई थिंक कल सिराज जिस तरीके से बॉलिंग करा, आई एम नॉट गोइंग विद अ बैट्समैन दिस टाइम, आई एम गोइंग टू गो विद मोहम्मद सिराज, शोइंग अ लॉट ऑफ साइंस ऑफ मैच्योरिटी के साथ साथ आई थिंक हर टाइम पे उसका कॉन्फिडेंस into 2 होते जा रहा है. आई थिंक वो बहुत अच्छी चीज है. ही इज बॉलिंग इन द राइट एरियाज, ही इज नॉट ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट और गो आउट ऑफ द बॉक्स. जो line and length maintain करके रखा हुआ है, and in the first match you saw his figures speak for itself. So I'm going to go with Mohammad Siraj from India, and from Bangladesh I think I'm going to go with another bowler. That would be Mustafizur also bowled extremely amazing in the first time. I'm probably going to go with the bowling department rather than the batting, but yeah, Mustafizur is going to be someone to watch out for. उसके figures जबरदस्त थे last match में भी. think 7 overs कुछ 19 runs कुछ मारा उन्हें. So yeah, Mustafizur for me from Bangladesh, and Siraj bhai Mia Hyderabadi from India. From India. I'm going to go a bit safe for Bangladesh. I'm going Saqib because he can give me points with the ball and bat, and he picked up 5 wickets in the last game, so I'll go a bit safe that way. All-round performance. अगर wickets भी नहीं लिया, अगर 2-3 wicket भी ले लिया, points मिल जाते, 20-30 run मार गया तो runs मिल जाते. So for me, I'm going to go Saqib Al Hasan. And then after that, from India, it's a tough one because I think Siraj, you nailed it, outstanding option. I'll go Washington Sundar. I think all-rounder with the bat, he might be called upon with the ball as well. I'd like to see him pick up more wickets, try something different, flight the ball a bit more, toss it up, and see if he gets hit for a few boundaries, no issues. So that's what I want to see. Nitin bhai with us. Hello Mustafa bhai, क्या हाल है आपके भाई? सब ठीक ठाक, बढ़िया. आप सुनाओ कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. मनोज भाई को जोड़ दो यार. मनोज भाई अभी बांग्लादेश में है.
अगर वो फ्री है तो ट्राई करेंगे ये सीरीज में। वो अभी बांग्लादेश में बिजी है, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहे हैं, मैचेस अटेंड कर रहे हैं, इंटरव्यूज भी ले रहे हैं, तो बढ़िया काम कर रहे हैं। हम सपोर्ट कर रहे हैं उनको, जब भी वो फ्री है पूछेंगे उनको, वो फिर जुड़ सकते हैं हमारे से, इधर फ्रॉम बांग्लादेश। जब वापस जाएंगे इंडिया से तो उनको जोड़ेंगे। तो हमारे खास दोस्त थे सारे स्पोर्ट्स यारी के, खासतौर के मनोज भाई ये चैनल पे आ चुके हैं। तो यार नितिन भाई, आपके जो भी सवाल है कमेंट से आप पूछ सकते हैं। सॉरी फ्रेंड्स। No, I was saying the same thing. कोई सवाल अगर आपको है, you want to discuss something, you have some point, please नितिन भाई feel free. मनोज भाई, मुस्तफा भाई, सब सब भाई हम लोग साथ में, we love cricket, तो we'd love to discuss and know your point of view. आपका point of view क्या है कल के मैच को लेके? तो yeah. But yeah, I mean, Abhi, what do you think about, what do you make about Rohit Sharma, Virat Kohli? I would say very unlucky last match, but like Rohit Sharma, what do you think? What his mindset would be going into this game? He's under pressure, bro. I think Rohit Sharma is under pressure. You can see it on his face. You saw it in the T20 World Cup. Not only with this captaincy, there's a lot of questions. With the bat, there's a lot of questions. The best way to answer it is to score runs and win games. That's the best way to answer it. And, he has the talent. He has the experience. I would like to see him take a bit of time. He got a beauty of a delivery against Sakib, but that's not an excuse, because in the T20 we saw him also throw his wicket at times. And I feel that in 50 overs he can take a bit of time. And Rohit Sharma is someone who can accelerate from 0 to 100 in 2 seconds, in a split of a second. तो मेरे लिए रोहित शर्मा थोड़ा टाइम ले, पिच पे आराम से खेलो और फिर उसके बाद चार्ज करो, because 50 overs में टाइम मिलता है. The main focus for Rohit Sharma is to get runs. Once he gets runs and stuff, then you can start changing the template and everything. It's different in India. It's not like Ben Stokes. That shot he played. I watched it again first today. It was such a bad shot in the second innings. He got up for 0. He played such a bad shot for a test match. But no one cares, bro. No one cares, because he won his team, takes the gamble. So that's the risk, right? He doesn't. Ben Stokes can afford to do that because he has that mentality. It's very difficult to implement that. अच्छा हुआ इंडिया हार गई. अब सीरीज का और मजा आएगा. इंडिया हमेशा से पहले मैच जब भी हारते हैं सीरीज जीतती है. देखो ये बात भी है, लेकिन इंडिया स्लो स्टार्टर्स भी है. अगर नितिन भाई, अगर आप भी गौर करें तो जब टूर्स पे जाते हैं उन लोग, बिकॉज ऑफ द हेक्टिक स्केड्यूल, उन लोग एक्लेमेटाइज नहीं होते कंडीशंस को, तो पहला मैच हार जाते हैं. या 36 ऑल आउट का भी देख लो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में, या जो भी टूर्स होते हैं, इंडिया को टाइम लगता है एक्लेमेटाइज होने. एंड दैट्स वेयर मे बी दे हैव टू प्रिपेयर अ बिट मोर and go to tours a bit earlier. I know it's difficult with the schedule, but that's something they have to look at, because नहीं तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. Maybe keep a separate team for white ball and send them on a tour earlier. नहीं तो यही होता. आप you saw clearly the New Zealand to Bangladesh adjustment was very difficult for them in the first. Yeah, 100%. भाई जेट लैग रहता, 10 जिला रहते हैं. I mean, you can't take away those aspects as well. कि आपको टाइम एंड मौसम भी ऐसा अलग अलग है वहाँ पे. कुछ इतने भी ज्यादा सर्दी नहीं होती जितनी न्यूजीलैंड में होती. तो yeah, definitely that will take a toll on the player. But you were rightly said, like Rohit Sharma will be under the radar, because I think वो जो उसका सेल्फ परफॉर्मेंस भी इतना ग्रेट नहीं रहा. आई थिंक दैट इज व्हाट्स ट्रांसलेटिंग इनटू एग्रेशन, इज व्हाट आई फील. कल भी लाइक ऑन द फर्स्ट मैच आल्सो वी सॉ हिम शाउट एट वॉशिंगटन सुंदर, एंड आई थिंक इट्स गेटिंग टू हिम दैट ही माइट बी वन ऑफ द मेन रीजन. एंड जस्ट राइट लाइक अ फ्यू सेकंड्स जो आप बोले कि बेन स्टोक्स वो बेकार शॉट खेला, लेकिन नो वन केयर्स, बिकॉज उन्हें जो तरीके की कैप्टेंसी करा, दैट इज व्हाट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे. सो फॉर अ कैप्टन इट्स लाइक either you perform with the bat or you perform with the winning thing. So it can't be like जस्ट के भाई तुम बैटिंग भी नहीं करेंगे बट यूर एक्सपेक्टिंग रिजल्ट फ्रॉम द टीम. आई थिंक वो भी नहीं हो सकता. एंड अगर खाली रिजल्ट्स भी आ रहे समवेयर डाउन द लाइन, वो भी होगा कि भाई तू बैटिंग नहीं करा. तो इट्स अ टू वे रोड ऑफ प्रेशर टू रोहित शर्मा. पर या इट्स गेटिंग टू हिम, हिज सेल्फ confidence I think थोड़ा low है उसका. I think that is also getting to him, which is translating into aggression and sort of foul language on the pitch. But hopefully, I mean, he has experience. I think he just needs to sort of calm down and just take it one game at a time and slowly get back into the rhythm of batting. How much do you think is Bumrah a miss for Rohit Sharma, the captain? Because आप देख चुके हैं IPL में भी उन्हें बहुत रिलाई करता बुमराह पे, इंडिया के लिए भी बहुत रिलाई करता बुमराह पे. So how big of a miss is he? Like because even you saw the T20 World Cup, the way the team selection हुआ and everything, बुमराह नहीं था initially, फिर था, फिर उसके बाद drop हो गया and everything because he was injured. So do you think that affects Rohit Sharma's game plan, just with Bumrah? बुमराह का क्या है, बुमराह इज अ वेरी बिग प्लेयर फॉर इंडिया. यस, उन्हें स्पेशलिस्ट है, डेड ओवर्स का स्पेशलिस्ट है, मैं समझ सकता हूँ. बट आप इतना भी डिपेंड नहीं कर सकते एक प्लेयर, क्योंकि आपके पास और 10 प्लेयर 9 प्लेयर आपको भी हटा दिया अगर मैं रोहित शर्मा, तो 9 प्लेयर है भाई आपके पास. तो इट्स नॉट
yes, Bumrah is a big void and उन्हें हर जगह important टाइमों पे निकाला. But like you said a few days ago, 2019 World Cup भी we lost and 2021 also we lost. बुमराह नहीं था उसमें, injured था बुमराह. तो देखो भाई, बुमराह रहो नहीं रहो, एक प्लेयर से गेम चेंज हो सकता on certain days, but consistently अगर आप कुछ जीतना चाह रहे हो तो it's not going to happen with a one player, it's going to happen with a collective effort. या तो रोहित शर्मा needs to start trusting his other bowlers, या तो he has to understand that बुमराह थोड़े टाइम तक नहीं है, and just सिराज इज ऑल्सो बॉलिंग अमेजिंग, अर्शदीप अच्छा डाल रहा है बॉलर्स हैं अच्छे जो बुमराह के बिना भी काम चला. वी बीट पाकिस्तान विदाउट बुमराह. सो आई थिंक बुमराह इज अ की फिगर, नहीं, नो डाउट उसमें, बट ही हैज टू सर्टेनली अंडरस्टैंड कि भाई विदाउट बुमराह ऑल्सो एक लाइफ अहेड है. लाइफ अहेड है, बिल्कुल सही बोले. यार मैं भी मुस्लिम हिंदी बोलो मुस्लिम भाई थोड़ी तो कोशिश करूंगा सर. मेरी हिंदी उतनी तगड़ी नहीं है, मतलब मगर जो भी है मिक्स करके बात करेंगे इंग्लिश और हिंदी में. थोड़े ऑडियंस हिंदी स्पीकिंग है, इंग्लिश स्पीकिंग है, थोड़ा फ्रेंच भी बोल देंगे बीच में अगर बोलना है तो. लेकिन जी बिल्कुल आपके लिए मैं बोलूंगा हिंदी. मुस्तफा भाई सर बोल रहे हैं मुझे, मैं कौन सा सर. तस्कीन अगर होता ना फर्स्ट ओडिया में और मजा आता. बिल्कुल फैज भाई यही बोल रहे हैं जब से कि तस्कीन अहमद जो T20 में परफॉर्मेंस दिया वर्ल्ड कप में, वो जो पेस था, लाइन एंड लेंथ, ट्राइंग टू विराट कोहली को परेशान कर दिया था. विराट कोहली परेशान हो गया था. बैक टू बैक बॉल्स जो विराट कोहली उसको फेस करा था. आई कांट फॉरगेट विराट कोहली की सूरत जो थी यूं हो गया था एकदम से. सॉरी मुस्तफा, आपको कट कर दिया था. नहीं, आपका ही पॉइंट था ये. तस्कीन आप ही बोल रहे पहले से, राइट? यू बीन टॉकिंग अबाउट तस्कीन अहमद, हाउ क्रूशियल ही इज टू बांग्लादेश, एंड यू आर वेरी एक्साइटेड टू सी हिम, एंड यू आर वेरी इंप्रेस्ड विद हिम. एंड आप जब बोले बात, मैं भी गौर करा कि भाई इन्हें लाइक ही इज कॉजिंग प्रॉब्लम्स फॉर लॉट ऑफ बैट्समैन. एंड या वो पेस है एक्स्ट्रा, एंड मजा तो आता. और एग्रेशन है, उन्हें गालियां भी देता, ये वो देता, बैट्समैन को तंग करता, तो मजा तो आता. फैज ये पढ़ो कमेंट प्लीज. मुस्तफा सर एक बात, और 2002 में पॉन्टिंग मुस्तफा सर एक बात, और 2002 में पॉन्टिंग मानेंगे कि नेक्स्ट ईयर कप विन. 2010 में धोनी, 2018 में मॉर्गन, नाउ 2022 में कमिंस ने मारेंगे कि वो नेक्स्ट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया का है. नितिन पाजी, थोड़ा आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड आपका क्वेश्चन. फिर अगर आप रिफ्रेश कर सकते हो. मेरे को जहां तक समझ में आ रहा है कि आप बोले 2000 में पॉन्टिंग मारेगा वर्ल्ड कप, फिर धोनी 2011 में या 10 में, एंड 2018 में मॉर्गन, नाउ 2022 में बोले कमिंस मारेगा वर्ल्ड कप. सो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया इज गोना विन. कुछ लिंक है एक साल पहले, मतलब एक साल पहले का लिंक कर रहे, बिकॉज वर्ल्ड कप 2003 में था, 11 में था, 19 में था और 23 में है. तो कुछ लिंक है एक साल का. वो कुछ कनेक्शन है. अगर नितिन भाई आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं तो. व्हाई केएल राहुल ऑलवेज प्लेज अगेंस्ट पाकिस्तान? दिस क्वेश्चन इज मिस्टर पास्ता है. केएल राहुल इज अ वेरी बेचारा कॉम्प्लेक्स फिगर है. मतलब उनके अंदर बहुत सा टैलेंट फूट के है, लेकिन वो टैलेंट फूट के नहीं निकलेगा, सीधा दिमाग पे टेंशन ले लेते हैं. आई थिंक ही टेक्स टू मच प्रेशर ऑन हिमसेल्फ. अगर मैं बहुत ज्यादा क्रिटिकल हूँ केएल राहुल के बारे में, बिकॉज केएल राहुल फॉर मी हैज ओनली परफॉर्म अगेंस्ट बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, एंड लाइक श्योर लोअर टेबल पे, जो रैंकिंग के टेबल पे अगर अपन एक लोअर एंड वालों से ही उन्होंने परफॉर्म करता है. यस, एक आध और अच्छा सेंचुरी मार लेता है इधर उधर, बट फॉर मी ही इज नॉट अ कंप्लीट प्लेयर येट. अभी तक उनको इतनी मेंटल स्ट्रेंथ नहीं आई है कि ही कैन बी अ मैच विनर फॉर इंडिया. So I think for KL Rahul the biggest issue is he takes too much pressure on himself. He feels the heat from the social media. He feels the heat from the he constantly thinks कि लोग मुझे देख रहे हैं, लोग मुझे obviously लोग आपको देखेंगे, but आप वो खेल के बताओ when it time comes, when push comes to shove, जैसा बोलते हैं हम. I think KL Rahul खड़े नहीं उतर पाते, and I think that only reason is that he takes too much pressure off it and forgets to play the game rather than thinking about how to play the game. और जब पिच पे कुछ रहता है, लाइक सब अबड़ा ग्रास, अबड़ा स्विंग, उसको एक्स्ट्रा पैसे कुछ प्रॉब्लम होता है. लाइक अगर आप देखें अगेंस्ट शाहीन, अगेंस्ट नसीम शाह, ऑल्सो अगेंस्ट रबाडा नोके, थोड़ा प्रॉब्लम रहता है इन कंडीशंस वेयर there is something there for the bowlers. ठीक है, on flatter tracks he can play fast bowling very well, he has the talent, बट वो थोड़ा इशू मुझे दिखता है. तो मे बी मिडिल ऑर्डर में अब उन्हें खेल रहा वनडे क्रिकेट में, मे बी दैट सूट्स हिम मोर, एंड होपफुली बिग मैचेस में मिडिल ऑर्डर में वो ज्यादा अच्छा उभल के आएगा कंपेयर टू एज एन ओपनर. बट अच्छा, मैरिज बोल रहे हैं. तो व्हेनेवर एक बार कैप्टन शादी कर चुका है, वो वर्ल्ड कप जीत चुका है. ये पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग है. आई थिंक हर कामयाब कैप्टन के पीछे शादी बोल रहे नितिन भाई.
मतलब शादी बहुत अच्छी चीज है, हमको भी करना चाहिए, सबको करना चाहिए। एंड ये बहुत जबरदस्त लिंक निकाले, लाइक आई हैड नो क्लू अबाउट दिस, नोर डिड आई हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस। मगर आप ये जो फैक्ट्स निकाल रहे हैं नितिन भाई, ये अनबिलीवेबल फैक्ट्स है ये। मतलब मैं क्रिकेट फॉर क्रिक बस रोज पढ़ता हूँ, मैं कहीं भी नहीं देखा ये तो। गुड स्टफ मैन, इंटरेस्टिंग टू नो। बट हाँ, मैं उतना ध्यान नहीं देता हूँ ऐसी चीजों में, मतलब तो लक अब है देखना मेरे पड़ेगा को। फुटबॉल वर्ल्ड कप में किसने शादी करी है अभी अभी लास्ट ईयर, शायद वो लोग जीत जाएंगे। पता नहीं यार, मगर वही है कि लाइक कोइंसिडेंस है, मैं क्या बोलूं, मतलब अच्छा निकाले आप। लेकिन आई लाइक दैट। तो कमिंस की शादी हो गई ये साल? आई थिंक मनोज भाई की कहते कमिंस भाई की शादी हो गई। हाँ, कमिंस मैरिज किया तो, इफ कमिंस गेट्स मैरिड बोल रहे हैं, अगर कमिंस की शादी हुई तो। इफ कमिंस गेट्स मैरिड, हाँ फिर हो सकता। मगर वही है, अब कंडीशंस वाइज अभी अगर आप देखें, साउथ अफ्रीका में ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत तगड़ी थी, उनके पास बॉलर्स थे, मगरा, गिलेस्पी, फिर बैट्समैन भी तगड़े थे। अगर आप 2010 में देखें तो 2011 में इंडियन कंडीशंस में थे फेवरिंग आपके सचिन, सहवाग, भज्जी, जहीर खान एट हिज टॉप, नॉट हिज पीक बट ही री-एवोल्यूशनाइज्ड हिमसेल्फ। फिर उसके बाद 2018-19 में देखो इंग्लैंड अगेन होम कंडीशंस में, तो कंडीशंस भी प्लेज अ फैक्टर। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स प्लेज अ फैक्टर, मैरिज माइट बी वन ऑफ देम। 2000 ये बताओ 2006 में किसकी शादी हुई ऑस्ट्रेलियन टीम में? बिकॉज साथ में गिलक्रिस्ट की हुई क्या? बिकॉज साथ में गिलक्रिस्ट मैन ऑफ द मैच था वर्ल्ड कप में। तो आई डोंट नो, बट आई थिंक कप्तान के बारे में बात करें तो पॉन्टिंग की हो गई, बता रहे हैं आप 2002 में। Can you see Pant place in one day World Cup? I can see it, Fez can't see it. That's what I feel. But yeah, Fez. आई कांट सी इट एज ऑफ नाउ बिकॉज अभी बहुत ज्यादा हीट आया हुआ है पंत के ऊपर। जैसे हम लोग कॉन्स्टेंटली हर रोज ये डिस्कशन में रहते हैं कि पंत या नो पंत। तो मेरे लिए तो अभी के फॉर्म को अगर मैं मद्देनजर रख रहा हूँ तो आई वुड से नो पंत, बिकॉज पंत को अभी इतना क्रिकेट खिला चुके हैं कि आई थिंक वो पक चुका है, और वो उसको क्रिकेट पिच पे नहीं ट्रांसलेट कर पा रहा है एफर्ट, और ये वो डाल रहा है एफर्ट। आई अंडरस्टैंड, टेस्ट में भी खेल रहा है, T20 में भी खेल रहा है, बढ़िया, बट उसके इनिंग्स कंटिन्यूअसली पोर हो रहे हैं, एंड इट्स जस्ट अ पोर चॉइस ऑफ शॉट, पोर चॉइस ऑफ रीडिंग द सिचुएशन। कुछ ज्यादा मैच्योरिटी नहीं दिख रही उसके गेम में, तो आई डोंट थिंक पंत डिजर्व्स अ स्पॉट राइट नाउ। इफ ईशान किशन परफॉर्म्स, अगर ईशान किशन को मौका दे रहा, आई वुड से टेक ईशान किशन टू द वर्ल्ड कप। ठीक है, ईशान किशन टू द। अब मेरा इस पे ये है कि ऋषभ पंत अगेन मैच विनर है, नाउ ही इज ऑन अ ब्रेक। अब खबर यही आई कि ही वाज नॉट इंजर्ड और ही वाज नॉट रिलीज्ड, ही वाज आस्क्ड टू, ही आस्क्ड टू टेक अ पर्सनल ब्रेक। प्रॉब्लम मतलब या हाँ, वो बोला कि मुझे ब्रेक चाहिए, एंड आई थिंक दैट्स द राइट कॉल। नाउ ही स्टिल हैज ऑलमोस्ट अ ईयर लेफ्ट, लेट्स से 10-11 मंथ्स लेफ्ट टू परफॉर्म। आईपीएल विल बी अ फैक्टर, फिर आपके समर में जो सीरीज रहेंगे वो भी फैक्टर रहेंगे, तो अभी टाइम है उसको कम बैक करने के लिए। बहुत टैलेंटेड बैट्समैन है, एंड होपफुली इफ ही वर्क्स ऑन हिज गेम, definitely Rishabh Pant is someone, if you ask any expert, any commentator, they always say कि भाई इसमें है X factor, just like Faz said कि consistency नहीं है। एक और बात जी नितिन सर, T20 वर्ल्ड कप में हमको सही टीम विनर नहीं मिला बिकॉज ऑफ रेन। कौन आप साउथ अफ्रीका बोल रहे हैं? मतलब यार देखो, साउथ अफ्रीका आ सकती थी अगर जिम्बाब्वे का मैच कॉल ऑफ नहीं हुआ, लेकिन नेदरलैंड से हार गया। अब मैं क्या बोलूं, मुझे भी साउथ अफ्रीका की बहुत तगड़ी टीम लग रही थी, मगर लॉस्ट टू नेदरलैंड बट मैं 42। यही बोलूंगा कि जिस तरीके से इंग्लैंड परफॉर्म करी थी अगर इंडिया को मार गिराने के लिए, एंड दे परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली, पाकिस्तान का भी फाइनल, तो मेरे लिए तो इंग्लैंड डिजर्व टू विन आफ्टर साउथ अफ्रीका, यस टू एन एक्सटेंट, बट अगर आप लाइक नेदरलैंड्स के अगेंस्ट हार रहे थे, देन सॉरी, यू डोंट डिजर्व टू भाई हमारे पहले फैन है। है। नितिन सर पहले कुछ भाई नॉलेज नहीं, बस पैशन है गेम के लिए। भाई मुस्तफा भाई और मैं आई थिंक लगभग हमारे बचपन से, आई थिंक 95 96 से फुटबॉल क्रिकेट दोनों, लाइक 90 फुटबॉल तो नहीं बट क्रिकेट 99 से देख रहे हैं, और फुटबॉल में थोड़ा और लेट स्टार्ट करा 2005 6 7 शायद। मुस्तफा भाई मुझसे पहले स्टार्ट करे थे। आई थिंक हम लोग के चर्चे ऐसे ही चलते रहते थे फोन पे, और आई थिंक हमारा घर में फोन के बिल भी इतने बढ़ जाते थे। अब जाके अभी इतना टेक्नोलॉजी आया, तो आप लोगों के लिए पॉडकास्ट भी खोल चुके हैं, तो होपफुली आप प्लीज फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और भाई हम विनेश, लोग आप सबके फैन से, नितिन भाई आप आज जुड़े, विनेश भाई जुड़ते रहते, कौन है, गुरप्रीत, गुरनूर भाई भी जुड़ते गुरनूर रहते भाई, हैं। चिराग भाई,
हाँ चिराग भाई, लिखित है, फ्री था, जो जुड़ते रहते हैं, इनका जो नॉलेज है आउटस्टैंडिंग है भाई। आई एम श्योर आप लोगों के पास दूसरा भी काम है, पढ़ाई है, मगर आप जुड़ते हैं, आप इतना नॉलेज हमको देते हैं, बिकॉज लाइक भाई हम तो इंसान है, लाइक हर चीज सही नहीं बोलेंगे, हमारे ओपिनियंस अलग होते हैं, मगर इसका जो कॉन्सेप्ट है शो का कि आप अपनी मन के बारे में बात करो, जो भी बोलना है, और जो भी नॉलेज हम गेन कर सकते हैं आपसे, या कहीं भी आर्टिकल्स बिल्कुल भी पढ़ते हैं, मैचेस भी देखते हैं, तो हम उसका बस वो करते हैं कि लाइक भाई बिल्कुल। डिस्कशन आई करते हैं। थिंक इट्स अ क्रिकेट बैठक है, क्रिकेट की सीटिंग है कि भाई बस चर्चा करना है क्रिकेट का, इतना पसंद है हमें क्रिकेट या फुटबॉल या जो भी स्पोर्ट ले लो आप। वी रियली एंजॉय लर्निंग एंड लर्निंग। अगर हम समझेंगे कि हमें सब आता है, देन आई थिंक वो, जैसे हम लोगों को भी शादी का नहीं मालूम था, हमने एक चीज नहीं सीखी, आपने शायद कुछ हमसे हाँ सीखा होगा, होपफुली सो आई थिंक इट्स जस्ट शेयरिंग द नॉलेज एंड क्या टॉकिंग अबाउट फैक्ट द था, ब्यूटीफुल गेम। क्या स्टार्ट था, अनबिलीवेबल। मैं एक साल पहले विनेश भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। या यस इट इज अर्ली शो, सॉरी अबाउट दैट, हमको थोड़ा मीटिंग्स है इसके बाद, एंड बिफोर द वर्ल्ड फुटबॉल मैचेस वी हैड टू डू दिस शो, तो दैट्स व्हाई। और आप फुटबॉल के ही सवाल पूछ रहे हैं। हेलो गाइस, वेरी अर्ली शो, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन, गिव यू प्रेडिक्शन अबाउट पोर्चुगल वर्सेस स्विट्जरलैंड। आई एम गेसिंग गोइंग विद पोर्चुगल एज फैन। Fez, go with your prediction, then I'll give you mine. my prediction is gonna be 2-1 to Portugal. मैं जा रहा हूँ उल्टो पलटा दो, 2-1 स्विट्जरलैंड, एम्बोलो एंड शकीरी टू हैव अ मास्टर क्लास ऑफ अ गेम टुडे। देखो मेरे पास दो तीन चीजें हैं इसमें। एक चीज ये है कि अभी अपसेट हुआ नहीं ये राउंड में, सारे बड़ी टीम जीत रहे हैं। स्पेन मोरक्को भी अपसेट हो सकता है, मुझे मोरक्को की टीम बहुत Yeah, जबरदस्त दिख रही है, of वहां पे course. ज्यादा मुझे अपसेट के चांसेस दिख रहे हैं, बिकॉज मिडफील्ड में अगर आप देखो, मिडफील्ड में जो अच्छी है स्पेन की, हाई पोजीशन फुटबॉल खेलते हैं, उसमें मोरक्को प्रेशर डाल सकती है, मतलब एकदम से आके हाई प्रेस खेल सकती है, और they can outrun Spain in certain situations. So I think in that way, I would give Morocco a chance in this game. And then Switzerland का ये कि भाई पोर्चुगल का टीम जबरदस्त प्लेयर्स है, वर्ल्ड बीटर्स है, आपके पास रोनाल्डो है, ब्रूनो है, बर्नार्डो है, कंसेलो है, लेकिन केमिस्ट्री का इशू है। लाइक आई जस्ट फील दैट दे डोंट प्ले टू देयर पोटेंशियल। Yeah. कभी डिफेंसिव हो जाते हैं, विच इज नॉट अ बैड थिंग, मगर आई जस्ट फील दे डोंट प्ले टू द पोटेंशियल। और फिर से बस हम कल रात में बैठ के देख रहे थे कि रोनाल्डो का और कोच का फिर से इशू हो Frank गया। Santos, yeah. So this is not a Ten Hag problem or United problem. This is a Ronaldo issue. तो ये भी है। बट ये है कि भाई जिस तरीके का रोनाल्डो है, अगर उसकी जिस दिन फिर गई, मतलब फिरी भी तो है, ऑब्वियसली ही नॉट बीन एबल टू स्कोर गोल, और मैं मानता हूँ ये बात, बट गिवन भैया एनी उसकी डे गलती थी वो गोल का हाँ अगेंस्ट कोरिया, 100%, उसको 100%, हटा दिया बेंच 100% पे, क्या गलत करा, कुछ था उन्हें, दैट्स व्हाट आई डोंट सही। अंडरस्टैंड। नहीं नहीं, ये सही है, बट गिवन द डे he will change the game, तो मेरे लिए रोनाल्डो will always be that player. And स्विट्जरलैंड was also, yes, बहुत अच्छी खेली, आई थिंक लास्ट मैच भी जबरदस्त खेले, बट अभी भी they aren't very confident in their pursuit towards the quarter final, अभी भी like लगते लगते आ गए। they have amazing players, and they have एम्बोलो है, झाका है, शकीरी है काफी अच्छी टीम है, बट एज अ यूनिट भी कंप्लीट नहीं दिख रहे। So is like थिंग, बट अगर इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे जाएंगे तो ब्रूनो भी जबरदस्त खेलते जा रहा, तो आई फील 2-1 पोर्चुगल, बाकी सब गॉड विल टेक केयर। यार मुझे पसंद आता फैस को छेड़ने, तो अगर पोर्चुगल हारी तो मैं मजे मजे लूंगा। मैं तो फिर देखेंगे। नो साउथ अफ्रीका, नो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड जो ड्रॉ हुआ, ऑस्ट्रेलिया विनिंग हो बारिश की सकता वजह है, से हो नहीं। सकता है, मगर भाई नितिन भाई, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया परफॉर्म करी, सॉरी मुस्तफा, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया परफॉर्म करी थी, उतने कॉन्फिडेंट नहीं दिखे एज अ यूनिट। वहां पे मैक्सवेल भी आई थिंक इंजर, लाइक मैक्सवेल भी उतना ग्रेट नहीं खेल रहे थे, कोई मतलब वार्नर भी बेचारा आउट होते गया, एक बार बोल्ड हो, या फिर उसके बाद एक अच्छी कैच ले ली थी, वार्नर भी कंसिस्टेंट नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया में हाँ स्टोइनिस था एक प्लेयर जो जबरदस्त मारा था, एक मैच मुंह फोड़ दिया था, बट उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया उतनी ग्रेट साइंस ऑफ जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया नहीं दिखी थी, जिस तरीके से हम देखते आए हैं इन लोगों को ओवर द इयर्स। तो आई थिंक मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया तो नहीं हुआ होगा। इंग्लैंड न्यूजीलैंड को मारती थी, जो न्यूजीलैंड फॉर्म में थी, तो आई मीन मुस्तफा, आपके क्या राय है इस पे, व्हाट डू यू थिंक? हाँ, अगर पिछले वर्ल्ड कप भी देखे थे दुबई में जो था, उसमें भी इंग्लैंड सुक्का मार दी थी ऑस्ट्रेलिया को, 9-10 विकेट से जीती थी। तो इंग्लैंड डोंट फियर ऑस्ट्रेलिया एनी मोर इन द वाइट बॉल फॉर्मेट। ठीक है, एशेज में स्पेशली रेड बॉल में इन ऑस्ट्रेलिया हैव द अपर हैंड अगेंस्ट इंग्लैंड, एंड यू कैन आल्सो से इन इंग्लिश कंडीशंस थोड़ा वेरी होते हैं, मगर in white ball format, England are a much stronger team now against Australia. Australia have a lot of really good players, but I just feel white ball cricket, no one is better than England. On their day, they can beat anybody. तो अब सही है, कुछ भी हो सकता है। जिम्बाब्वे हरा दी पाकिस्तान को, नेदरलैंड्स हरा दी साउथ अफ्रीका को, तो ऑस्ट्रेलिया बीटिंग इंग्लैंड won't be an upset, but
I just feel on their day England just could smash anyone, man. Crazy. सॉरी यही कमेंट लेना था मेरे को कि भाई ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज होने वाली है, टेस्ट बेस्ट सीरीज होगा, देखना आपकी पता होगा। धीरज भाई धीरज भाई स्पोर्ट्स यारी के अफ्रीकन फैन है, क्लास एंड माय फेवरेट भी आएगा भाई। I am really looking forward to that series. I think that is going to be the best test series of this year. That I'm just calling it right now. You have world-class bowling attacks on display. You have some solid batsmen on display. And if Rabatt and Nokia are fully fit, this is going to be unbelievable. And Faiz, if you notice that until India did that Gabba victory, if you notice, a lot of teams used to struggle every team struggles in Australia except for South Africa. Because conditions थोड़े बहुत similar है ना पिच के भी, तो उनके पास या वो बॉलिंग भी है ट्रबल करने बैट्समैन को। मार्नस लैविशन एंड स्मिथ वर्सेस रबाडा नोकी। पानी आ गया मुंह में यार, नितिन भाई क्या याद दिला दिया है। रोनाल्डो हैज टू स्टेप अप। Ronaldo, like, listen, if he comes off the bench, he's going to win it for Portugal. If he starts, I don't know, कुछ भी हो सकता। मोहन शर्मा, शुक्रिया भाई जुड़ने के लिए। आई थिंक पहली बार देखूं आपका नाम। थैंक यू सो मच। मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब और सवाल भेजते रहिए आप। क्या इस साल एशिया कप हो पाएगा? इस साल तो नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर होगा। इस साल तो खत्म हो रहा है भाई 2-3 हफ्ते में। तो ये नहीं, बट लाइक अगर नेक्स्ट ईयर के हिसाब से देख रहे हो नो, नेक्स्ट ईयर भी अगर लाइक आईपीएल है, फिर 50 वर्ल्ड कप होगा, आई थिंक होगा, बट आई थिंक टुवर्ड्स नवंबर या दिसंबर, probably October. Is the Asia Cup scheduled in 2023 in the schedule? अभी तो I don't see it, but I guess होगा eventually. नहीं, वो controversy चल रही थी। It is scheduled, bro, because रमीज राजा बोल रहा था कि if India don't come to Pakistan for the Asia Cup, then we're not going to go to India for the World Cup. I think it's this year. Next year. Sorry, next year 2023 में है। होगा भाई, आई थिंक दुबई में ही होगा मेरे हिसाब से। मेरे को जहां तक मालूम है वुमेन्स एशिया कप इज स्केड्यूल्ड, बट आई डोंट नो अबाउट द मेंस का अभी तक। तो मेंस आई थिंक 2023 में समर के टाइम पे ही है वो, बिफोर द वर्ल्ड कप, बट लेट्स सी। Vinesh Kotwani, sir, it's unfair to drop Shahbaz Ahmed for Aksar second ODI. I think Shahbaz should play and Kuldeep Sen also. Only one change I want to see someone with Rahul Tripathi or Umran Malik. Look, in a certain way I agree with you. I don't think आप जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, लेकिन क्या है कि अक्षर पटेल आपको ज्यादा एक्सपीरियंस देता है, आपको बॉल के साथ ज्यादा थ्रेट देता है, स्पेशली स्लोअर पिचेस में जहाँ पे थोड़ा टर्न मिलता है आपको, वो एकदम से घुस जाता है, बिकॉज he bowls flat and fast. So when there's a winner turn for him, natural off the surface, it becomes very difficult for the batsman to read where the ball is going. So and also Aksar Patel with the bat has done really well. Look, I also agree. If you flip the coin, कि Shahbaz Ahmed is a young player. RCB में भी जब भी चांस मिलता he performed, उसको पूरा कोटा नहीं मिलता बॉल के साथ, बैट के साथ भी ऊपर नीचे करते रहते हैं, and he's given match winning performances. So I definitely you should back him. And so here's my look at it. If Aksar Patel is fully fit, you play him. But अगर 10% भी इंजरी का प्रॉब्लम है तो मत खिलाओ, शहबाज को खिलाओ. I think that's what I would do. But I think वैसा होता नहीं। I mean if 90% fit, India want to go out for a win. So I think वो सिचुएशन में अगर कंडीशंस को देख रहे अपन, एंड अगर बॉल स्किड हो रही है, आर्म बॉल डाल सके, अक्सर कैन टेक आउट क्विक विकेट्स, तो आई थिंक दे विल। दो शहबाज अहमद अच्छा परफॉर्म करा, ऐसा कुछ बुरा पिटा नहीं है, कुछ बुरा नहीं करा, वॉशिंगटन सुंदर भी नहीं चला अगर वैसा देख रहे तो अपन, बट आई वुड बी वेरी अनफेयर ऑन शहबाज अहमद। बट आई थिंक अल्टीमेटली अगर अक्सर 95-90% भी तो खिलाएंगे उसको। मगर वही है जो विनेश भाई की तरफ से अगर आप देख रहे हैं उनके तरफ से कि करंट सिचुएशन में यंगस्टर को चांस दो, बिकॉज़ अब हार गए सीरीज तो हार गए, बट एटलीस्ट उसको एक्सपोजर मिलता कि डू और डाई में कैसा खेलते हैं, तो ही इज राइट। है ना, या 100% है ना, आई एम बैकिंग हिज कमेंट, बिकॉज़ अपन भी यंग टैलेंट को ग्रूम करना चाह रहे, गिव देम हॉस्टाइल कंडीशंस। बांग्लादेश विल बी कमिंग आउट इन स्लेजिंग, इराक, मजा आने वाली है। लेकिन अभी जिस तरीके से इंडिया की टीम है, आई थिंक दे विल ऑब्वियसली लुक एट द बेटर ऑप्शन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। भाई सर मत बोलो, भाई बोल दो, या मुस्तफा ही बोल दो यार, कौन से सर who will 100 tomorrow baby? Match prediction, my prediction is good. Who will 100 bro? KL Rahul. I'm going to shake a D, bro. Shake it, because the thing is, Dhawan का मैं अगर notice करा, actually I want to talk about this, was that सबसे ज्यादा pressure उस पे हो सकता है, of course कैप्टन पे रहता है, मगर जॉब सिक्योरिटी वाइज अगर देखे इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, रोहित शर्मा कैप्टन है, विराट कोहली स्टार प्लेयर है, from the seniors 30 plus, who is the one who is likely to drop out if there is a issue with form? You have youngsters knocking in the wings. You have Ishan Kishan, Gaikwad, Prithvi Shaw, all these guys knocking on the door.
So who is the likely guy who will be replaced? I think it's Shikhar Dhawan. So I think Shikhar Dhawan, which is unfair also because Shikhar Dhawan has been captain whenever you need him to step up in the 50 overs. ये जो छोटे मोटे सीरीज थे जो youngsters को इतना अच्छा opportunity मिल रहा था, Shikhar Dhawan lead कर रहा था and he was guiding them well to a certain extent. So it'll be unfair on him, but I think he will have to perform because अगर उसके 2-3 सीरीज में नहीं आए runs फैज पर प्रॉब्लम होगा उसको. All eyes will be on him and people will say कि भाई he's getting older and everything. कल उनके बर्थडे भी थे तो हैप्पी बर्थडे टू शिखर जी. बट आई थिंक all eyes would be on him. Right now it's fine, but if he doesn't perform in a couple of series down the line, his World Cup place might be at stake. 100%, and I think sahi hai. He's 37 years old. Yesterday again, happy birthday Shikhar ji. But yeah, I think उन्हें captain भी रह चुका है already, and I think India is going in the reverse direction जहाँ पे usually लोग एक रोहित के बाद कोई young player को देने की और जगह probably they're shifting it with someone who's more senior and probably likely to say goodbye in a year or two to cricket. But yeah, I mean Shikhar Dhawan has perform कर रहा है, taking a lot of balls, but अपन जिस तरीके से उनकी इकोनॉमी देख रहे हैं, सॉरी रन रेट देख रहे हैं, 100 स्ट्राइक रेट, सॉरी 100 के अलावा नहीं है, रन बॉल ही मारते जा रहे हैं. कभी कभी 70 मारा था तो ही टुक 77 बॉल समथिंग लाइक दैट. तो शिखर धवन जबरदस्त प्लेयर है. आई लव हिज टेक्निक, आई लव लेफ्ट हैंडर को देखने में अलग ही मजा है बिकॉज अपन खुद लेफ्ट हैंडर है. बट या अगर परफॉर्म नहीं करा ही विल बी ड्रॉप्ड एंड देन आई थिंक इट अगेन कोई होगा कि गायकवाड. बट अगेन विल यू गिव अ गायकवाड और अ त्रिपाठी अ चांस और वुड यू गिव समवन एल्स अ चांस? नॉट सब्जेक्ट टू दिस series, but overall I'm saying would you bring in someone experienced one? Guys, from like who would you like to see in the top 3? जो भी chat में आप बता सकते हैं कि top 3 इंडिया के लिए openers and one down. अगर अभी is very early to say, मगर वर्ल्ड कप के लिए आप कौन चाहते हैं? Doesn't mean they have to be in form or they're currently anyone. अगर 3 openers अगर अपन चाह रहे, obviously रोहित शर्मा will be one. रोहित two शर्मा openers के and अलावा one down. 2 openers and one. नहीं, actually forget one down. You're right. 3 openers जाएंगे backup opener के साथ. Because Virat will play one down, we know that. So let's go 3 openers that you would like to see in the World Cup, 1 on the bench and 2 starting. Also tell me in the chat कि भाई हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट कौन है, किसको ग्रूम करना चाहिए, किसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए. क्या वो शार्दुल ठाकुर है, क्या वो वेंकटेश अय्यर है, क्या वो शिवम दुबे है, मगर द थिंग इज नहीं, मेरे को मीडियम पेस वो होना ऑलराउंडर. मेरे को स्पिनिंग ऑलराउंडर तो बहुत ऑप्शंस है आपके पास. सुंदर है, पटेल है, शाहबाज, यू हैव अ लॉट. But yeah, we have Nitin bhai saying Gill, Rohit and Virat. A lot of people talk about Shubman Gill as well. You know, Shubman Gill. And a lot of people are talking about Virat opening. What are your thoughts on that? One day. No, one day for me, Virat Kohli in the white ball format is one down, bro. He's my number 3, go-to number 3. You saw what he did in that T20 World Cup against Pakistan. He did that from the number 3 position. You know, all his big scores have come from that number 3 position. That 183 against Pakistan also came from there. That historic match against Sri Lanka in Australia, where he scored 130, 140 in like 100 balls. That was also at number 3. So I want to see Kohli at number 3. Opening wise, should I tell you mine? But it's very out of the box. Go ahead. This is my top 4. I'm going to tell you my top 4, top 5, okay? But this can change. But right now, if I'm just looking at Rohit Sharma, Prithvi Shaw, Virat Kohli, Shubman Gill at number 4, and number 5, Surya Kumar Yadav. Hey, this is a very good shout, Nitin bhai, very good shout. Raj Bhav, मैं भूल गया under 19 में क्या performance दिया उन्हें World Cup में. He was extremely good. They have to groom him. He's still young. So I don't know if he's going to get a chance, but I think yes, give him a chance. Keep playing him. At least in India, 8 overs, take him there, and then from there in the IPL matches, play him there, and then get into the Indian team. I think that's a very good shout. Very impressive in that under 19 World Cup, but the transition will be difficult. So I'm not going to keep the same expectations of him right now, but I think groom him and continue to groom players. Like, you know, England have 15 all-rounders. You also groom 15. You have that potential. Ayer, Raj Bhawa, best है bowling all-rounder में. Yeah, Venkatesh Ayyar is a very good shout as well. Like, you know, he can provide you those 6-7 overs with the bat. Also, he can hit you. And in Indian conditions, Fez, I think these guys can be more suited. And Venkatesh Ayyar likes playing pace as well. So he's an aggressive batsman. So I'm excited to see that. Majority right now are going with Gill, Rohit, and Virat. Gill is very popular guy. Yeah, Shubman Gill. Yeah. I think I mean अच्छा है, young है, he has अच्छा balance है उसके अंदर. उसको मालूम कि कब कौन सी शॉट खेलना. Very early to understand the conditions. Mature है, क्या shot selection जबरदस्त है. तो yeah, I mean why not? Shubman Gill should be given a chance, I think.
बट अगर शिखर डी अगर परफॉर्म करा तो क्या आएगी फिर? Mr. Nitin Parsi is asking after स्टेन 2000, who is your favorite bowler? My favorite Stain. You first. मेरा फेवरेट बॉलर 2000 के After बाद, 2000. ओ हैव टू गो बैक, इफ यू हैव योर्स यू टेल। अरे भाई ये बोला है बॉल फॉर्मेट्स पूछ रहे हैं या एक फॉर्मेट का पूछ रहे हैं, बताओ, बिकॉज फिर चेंज होता, बिकॉज एंडरसन टेस्ट मैचेस, but for all format I'll have to change it because Kane is probably one of the best, but I'll tell you my favorite. WTC का सिनेरियो क्या है, इंडिया कितने लूज करना अफोर्ड कर सकते, इंडिया को पूरे जीतना है, एक शायद अफोर्ड कर सकते हैं हार, बट आई थिंक पूरे जीतना है इंडिया को। 6 मैचेस है या 7 मैच बाकी है, इंडिया को सारे जीतना है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल आने के लिए। मुश्किल होगा, मगर अगर मैं स्केड्यूल देखूं, बांग्लादेश का सीरीज है, फिर ऑस्ट्रेलिया का बहुत तगड़ी सीरीज है एट होम मार्च में, वो पूरे वाइट वॉश करना है ऑस्ट्रेलिया को उधर। आई थिंक दे कैन मैक्सिमम अफोर्ड टू लूज वन गेम, राइट भाई। लेकिन ये भी है कि अगर दूसरी टीम्स हारे, जैसे पाकिस्तान हार गई, वो भी कंटेंशन में है, तो शायद इंडिया को थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस मिले, लेकिन मेरे हिसाब से उतना रूम नहीं है फॉर एरर। Siraj is improved significantly under Shikhar Dhawan from West Indies tour. Which thing he has changed in his bowling after a very bad IPL where he was going at 9 runs and over and couldn't take wickets? I think the best thing that he has done, Manish bhai, is that he's cut down his variations and he's stuck to a line in length, and he's got rid of that bad ball he used to bowl in over. I remember Sunrisers debut में उसका पहला ओवर जो था 5 जबरदस्त, फिर down the leg side 4, second over में वही हिसाब। Now he's become more consistent and also he's understanding the pitch better. उसको मालूम है कि भाई अगर ये पिच में मैं शॉट डालूं तो विकेट मिलेंगे, तो एकदम से लेंथ ड्रैग करता, और उसकी यॉर्कर भी इंप्रूव हो गई, डेथ ओवर्स में यॉर्कर इंप्रूव हुई, कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी इंप्रूव हो गई। ये आता है एक्सपीरियंस से। अगर मोहम्मद सिराज, फैज ज्यादा बता सकते हैं बिकॉज फैज देख चुके हैं सिराज को बिफोर he made it to the professional level. फैज वही लीग में खेलते थे, HCCL, हैदराबाद क्रिकेट पॉपुलर लीग, जो सिराज खेलता था, और सिराज वो टाइम पे 22-23 था, he was old compared to the youngsters who come into the Indian team, and that time he was playing corporate cricket, not professional cricket. So Fez, you see Siraj is a very quick learner, वहां से भी उन्हें उसका जो पेस था, हमारे दोस्त थे हसन भाई, 2-3 छक्के भी मारे थे, मगर अब हसन भाई को बोल रहे हो कि भाई मैं नहीं खेल सकता हूं उनको, because his pace is improved, his accuracy is improved, and Siraj is a very quick learner. That's what I noticed about him. I think the difference क्या होता है at that level where we played, corporate level is nothing, but like आपको इनिशियली क्या रहता है, आप यंग हैं, आपको पेस बताने की एक और रहती है कि भाई आई हैव पेस, यू नो, आई वांट टू शो यू एंड आई वांट टू स्केयर यू, मैं आपको डराना चाह रहा हूँ, मैं पेस है तो मार ही नहीं सकता। मेरे को कोई थोड़ा ईगो ट्रिप रहता है वो एज में कि भाई तू मार के बता, भाई तू मार के बता, ये बोलेंगे। तो यू डोंट फोकस ऑन द लाइन एंड लेंथ एट दैट टाइम, यू जस्ट फोकस ऑन ब्रेकिंग द विकेट्स। आप विकेट तोड़ देना चाह रहे हैं, आप इसको बेसिकली उसको पीस के घर लेके जाना चाह रहे हैं एज अ मोमेंटो। अब कट बैक टू ahead of this, if you see कि अब जो सिराज निकल के आ रहे हैं, सिराज इज सेइंग कि भाई है पेस, मैं बताऊंगा जब बताने की जरूरत है, अननेसेसरी नहीं बताऊंगा मैं, when I want to change it up a bit, when I want to pacing up the game a bit, when I want the batsman to be under pressure, I will pull it, or else he is just sticking to the basics, and the basics will always get you a result. हमेशा बेसिक्स पे जाना है, फाउंडेशनल अगर आपका स्ट्रांग है तभी आपका घर मजबूत रहता है, अगर फाउंडेशन वीक है तो आपका घर नहीं चल सकता, which is what he has nailed it, और बिल्कुल ही जबरदस्त, you see this avatar of Siraj. Yeah, 100%. All format पूछ रहे फास्ट बॉलर, यार मैं मुझे एक बॉलर था, मगर he did not play for long enough due to big controversies, but Mohammad Asif was an outstanding bowler after 2000. He was one person after Glenn McGrath की मैं इतना enjoy करता था, but of course इंडिया के अगेंस्ट मैं डरता था कि भाई विकेट मत लो, मगर आप देख लो ऑल फॉर्मेट में, देख लो टेस्ट मैच में, वनडे T20, वो जो बंदा अंदर लेके आता था, बाहर लेके आता था बॉल, पाकिस्तान की कंडीशंस में उन्हें आई थिंक एक बॉल लक्ष्मण को डाला था, भाई बोल्ड कर दिया था, he had Lakshman on his knees. So in those conditions, then in England he bowled a super spell. जाके YouTube पे देखे आप 2009 मोहम्मद आसिफ highlights versus Australia in England. वो वाला भी क्या स्पेल था, तो but he did not have that consistency. If you look at overall, Dane Steyn is the best all-format bowler that we've seen in my opinion. But मेरा जो फेवरेट था वो था मोहम्मद आसिफ, ऑल्दो जब इंडिया के खिलाफ आता था मैं वो था कि भाई इसको मारो, लाइक इसको चांस मत दो, बट ही वाज आउटस्टैंडिंग मैन, क्या एक्यूरेसी थी बंदे की। 100% आसिफ के जैसा कोई बॉलर था नहीं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इट्स सैड आल्सो, ऐसे इतने
जेम्स ऑफ द गेम इतनी जल्दी सबसाइड हो जाते हैं। आई मीन वो भी एक बुरा लगता है कि भाई आमिर का भी अगर अपन One thing करियर देखे, is, yeah, आमिर का भी अगर अपन देखे करियर, ही वाज फैंटास्टिक uh, ब्रो, कितना जबरदस्त बॉलर yeah, था, लेकिन ऑब्वियसली वो होता है, इट इज अनदर पार्ट ऑफ द गेम, वो थोड़े लोगों को नहीं समझ में आती, बट होपफुली uh, ये ऐसे ऐसे आते रहे। बट या आई मीन व्हाई कुलदीप सैन इज प्रेफर्ड ओवर उमरान इन द फर्स्ट ओडीआई? I think he gives you that left arm angle. Also, Umran has been fast tracked into the Indian team, so they're trying to give him as much time possible. Like they're not like trying to like straight away give him too many games, but it's difficult to understand at times. But I think Kuldeep Sen also has played a bit more first class. He's been in and around the Indian team as well. He's played India ACDs, so he's been in and around a bit longer. So maybe that's why they wanted that left arm angle. Umran Malik should get a chance, but let's see what happens. I don't think Kuldeep Sen did too much. It could go either way. Yeah. Agar Umran Malik khela pehla and he didn't perform, then you would say that Kuldeep ko kyun nahi mila chance. So I think you can rotate between the two. You have two fast bowlers who can bowl really quick. So I think you should rotate between the two in a series as well. I think tomorrow you play Umran Malik, the next time you play Kuldeep. Because they're youngsters, you don't want them to get injured. They're going to play a lot of formats. I know consistency is also key. You want to give a player security, but at the same time, with young fast bowlers at this age, with so many formats around, I feel that you can alternate and they complement each other well in that sense. They both are very quick. Yeah, I So think yeah, I it'll think be that. crucial to see what team they pick tomorrow, because देखो तीन ही ओडीआई, अगर कल गॉड फॉरबिड अगर खुदा ना खास्ता हार गए, then I think they'll pick a much more younger side for the third ODI, because इतना हमारे ज्यादा साथ कुछ खेलने के लिए नहीं। हमारे साथ थोड़े और लोग भी जुड़े हैं, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, वी रियली अप्रिशिएट इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड हम आते रहेंगे क्रिकेट कंटेंट करते रहेंगे, और आप सपोर्ट करें तो फिर और कर सकते हैं हम एंड हमारे स्पोर्ट्स यारी भाइयों भी आएंगे जुड़ेंगे हमारे साथ होपफुली फ्यूचर में, हम लोग भी जाएंगे फुटबॉल का आजकल में जाना पड़ेगा, बहुत मजा आता है वहां पे भी, तो करेंगे हम। लेकिन फैज आपके लिए सवाल और मेरे लिए भी है कि आप कौन सा लेग स्पिनर खिलाएंगे वर्ल्ड कप में? उनका चॉइस नितिन भाई का है कि कुलदीप भाई? कुलदीप भाई तो ही इज माय बॉय मैन, माय फ्रेंड, आई हैव डन अ फ्यू शोज विद हिम, आई लव हिम एंड he had an outstanding IPL, and whenever he's given a chance he picks up wickets. I think he's really worked on his game mentally as well. He's much more stronger than he was before. He looks more composed now. I think as a youngster, especially a spinner, जब मार पड़ती है थोड़ा वो शैडो में चले आते हैं। केकेआर में जब मार पड़ी थी उनको इनिशियल स्टेजेस में थोड़ा उनका फिर गेम डिप हुआ था, but the way he's come back outstanding. I would love to see him and I would love to see Ravi Bishnoi. Those are my two bowlers. Kuldeep should definitely for me make Yeah, that World Cup. for me as well, I think Kuldeep is due a chance. I think he deserves a chance. उन्होंने जितने भी बार अभी तक खेले हैं, he has performed, अच्छा ही परफॉर्म करा, ऐसा कोई बुरा नहीं। चहाल का अगर अपन रिसेंट फॉर्म देख रहे हैं, यस चहाल ऑन हिज डे 4 विकेट्स मिनिमम गारंटी 3 विकेट्स करता आपको, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा इश्यू हो गया। आई थिंक मेरे लिए चहाल नीड्स टू रियली काम डाउन। चहाल भारी दुनिया बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं। आई थिंक ही जस्ट नीड टू स्टिक टू द पिच एंड द cricket, is my personal opinion. I mean, I might be wrong 100%, but for me, Kuldeep, is right now the number one bowler to get into the squad. कुलदीप एंड आई वुड लव टू सी रवि बिश्नोई बिकॉज आई नो दैट उसके गूगली ज्यादा रहते हैं, बट दोनों कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक रहेगा इंडियन कंडीशंस में। वो दोनों विकेट टेकिंग ऑप्शंस है। मार पड़ी तो पड़ी भाई, आपको 10 विकेट लेना है वनडे मैच में, तो आप उस हिसाब से खेलो। बिकॉज अगर इंग्लैंड शुरू भी अगेंस्ट इंडिया अगर मैच पड़ गया एंड इंग्लैंड अगर 100 for 0 हो गए, you're not going to stop them by bowling defensive off spinners. You have to take Yeah, wickets. That's the only way you can cut 100%. the run. Yeah. Uh, which thing is different between Hardik and Virat from all other current Indian players, that they can't score big runs or match-winning innings. So he's talking that Kohli and Hardik, I assume, score match-winning innings, whereas the other players like Rohit Sharma, KL Rahul, they don't step up to the party when there's a big match. Mindset, mentality. I think that is the difference between Kohli and Hardik, apart from all the Indian players. केएल राहुल को देख लो आप, सेम प्रॉब्लम ही बीन पर्सिस्टेंट विद। रोहित शर्मा आजकल वही हो रहा है उनके साथ, ही इज थिंकिंग टू मेनी थिंग्स। T20 में ये बोल रहे थे कि ही इज केएल राहुल नहीं परफॉर्म करे तो उनको वो प्रेशर आ जाता, व्हिच आई डिडंट फील। आई जस्ट फेल्ट कि उनको पावर प्ले में मारने की बहुत जल्दी थी एंड कंडीशन शो के नहीं कर रहे थे। वेराज इफ यू सी कोहली टेक्स हिज टाइम ऑन द पिच, एक 4 बॉल खेल के वो समझते हैं चीज। ऑब्वियसली दे आर he's a much better player than all of them, but Hardik Pandya has the same thing. Ball one से आके even if he takes his time, कंडीशन के हिसाब से, सिचुएशन रीड करने के हिसाब से हार्दिक पांड्या एंड कोहली के जैसे कोई प्लेयर नहीं है अभी इंडिया में।
मेरे हिसाब से विराट कोहली का जो यूएसपी है, इट मेक्स हिम बेटर देन ऑल द अदर बैट्समैन इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, इज दैट उसको मालूम है क्रंच सिचुएशन में गेम कैसा निकालो, और उसके जो रन आते हैं सेकंड इनिंग में आते हैं जब प्रेशर होता है। आई डोंट थिंक उसमें स्मिथ, रूट, विलियमसन, दीज गाइज आर आउटस्टैंडिंग, एंड टेस्ट मैचेस आई रेट स्मिथ हायर देन कोहली, नो डाउट, बट विराट कोहली, इवन यू कैन ब्रिंग सचिन इनटू दिस इक्वेशन, मैं बहुत बड़ी बात बोल दे रहा हूँ, मगर Virat Kohli getting runs in crunch situations, chasing a target, there is no one better than him in cricket, man. उसको मालूम है कि कैलकुलेटर है दिमाग में, मालूम है कब मारना है कब नहीं मारना है, Oh, हार्दिक I को think, बैकफुट पे yeah. छक्का मारूं, फिर ऐसे स्विवल करूं, रन रेट कितना है, एंड this was one of the best innings, but he's done this throughout his career. There's no one for me who has won matches for India or for other teams this consistently coming at number 3 and finishing off a game. थोड़ा बहुत शायद धोनी के साथ खेलने से भी हुआ होगा। धोनी नहीं हो पाजी। सकता, देखो धोनी भी मैच विनर था, लाइक इनिंग्स, मगर फर्क क्या रहता था, विराट कोहली नंबर 3 पे आता तो उसको न्यू बॉल भी फेस करना पड़ता, पूरा Yeah, गेम कंस्ट्रक्ट करना पड़ता, एंड I एमएस think. धोनी हैज वन इन केसेस फॉर श्योर, बट विराट कोहली हैज डन इट फॉर बिल्कुल, yeah, फॉर agreed. I mean, I think he just developed a success mantra बोलो या formula बोलो personally, that he knows कि भाई वो जो situation read करता है, he knows how to play to it. That is the best thing I like about him. He doesn't try a lot of things. जो आ रहा वो करता, and कैसे भी निकाल लेता, like you said. या 100%। नितिन भाई बोल रहे, आई थिंक आई टेल यू वन थिंग, हमारा वर्ल्ड कप में जब भी पाकिस्तान के खिलाफ खराब हुआ है, हम लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं था, 2019 में फंस गए थे, कुलदीप भाई ने बचा लिया था। हाँ देखो एशिया कप में भी जो मैच था 2018 में, मैं स्टेडियम में था, उसमें भी कुलदीप ने बाबर आजम को पिच ओवर डिलीवरी डाला था, और मैं पूछा ये कुलदीप भाई से कि आपको कौन सा बॉल अच्छा दिखा, इसे देखो वर्ल्ड कप का बॉल तो सब याद रखेंगे, मगर पर्सनली उनको वो एशिया कप का उनको भी बहुत अच्छा लगा था जो बाबर खुदा रहे थे। तो या लाइक लेफ्ट आर्म, इट्स नॉट ओनली लेफ्ट आर्म स्पिनर, इट्स आल्सो लेग स्पिनर, नितिन भाई, इफ यू नोटिस Yeah, व्हेन वी yeah, लॉस्ट टू पाकिस्तान वी गॉट ऑफ स्पिनर्स इन, and even in the Champions Trophy it was Jadeja and Ashwin in the Champions Trophy final. You both in defensive, and Pakistan play off spin well, from the likes of Hafiz down to Babar Azam to Iftikhar, they play off spin well. लेग स्पिनर क्या है, उन्हें इंटाइस करता, फिर आप फ्रंट फुट और बैक फुट का इशू हो जाता। अब बाबर आजम कैसा आउट हुआ फाइनल में इन द T20 वर्ल्ड कप, राशिद उसको फंसा दिया, आदिल रशीद फंसा दिया कि भाई yeah. आगे आऊं या पीछे आऊं, एकदम से क्रीज पे स्टक होके he hit it straight back to him. So the leg spinner entices you, whereas off spinner you know quickly कि ये बॉल बैक फुट पे या फ्रंट फुट पे खेलना है। लेग स्पिनर में because of the loop and the flight and sometimes the quick one, you don't know exactly कौन से फुट पे खेलना है बॉल। Correct. Does India need a transition after the One Day World Cup? If not, as Dhoni won in 2012, I think Yeah, जो धोनी yeah. transition करा था वर्ल्ड कप के बाद। Yeah, I think transition is always a key, but yeah, अगर हम extremely अगर अपन देख रहे तो yes, there are a few players that could say goodbye to this team. I mean, even it would include, I mean, it's a very big call, but I'd say Rohit Sharma, I think World Cup के बाद will maybe might retire, because I think उसका अगर he continues to be in poor performance, I think he has to call either one format goodbye, or either it could be the test or ODI, but he really needs to play lesser cricket, well IPL ये वो, and Shikhar Dhawan is another one for me who will say goodbye. Yes, I think we need to be more youth oriented. We have a lot of youth coming in. We have a lot of people. So I think to adjust those things and to look towards the next World Cup or the next T20 World Cup rather, I think we need to start making core teams of different formats. So not transition just for a team's sake, but a transition in overall management of the Indian cricket team. Yeah, 100% good stuff there, Fez. Why Virat is called a choke as he steps in every big situation, so much negativity towards everything. रोनाल्डो का सिचुएशन है विनेश भाई, ये भी जब आप गोट रहते हैं, आपको हमेशा आप एक मैच भी परफॉर्म ना करो, आपको नेगेटिविटी आना है। इट्स विराट कोहली, इफ देयर इज नो नेगेटिविटी टुवर्ड्स विराट कोहली, देन ही वोंट बी विराट कोहली। मैं एक चीज बोलता हूँ, मैं तो नहीं बोलता हूँ चोकर, स्पेशली आफ्टर दैट मैच अगेंस्ट पाकिस्तान, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलूँ, बिकॉज जो खुशी दिलाया वो इंसान वो इनिंग्स के साथ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। वो दिन जो इनिंग्स थी वो
लेकिन लोग बोलते हैं इसलिए बिकॉज आरसीबी के साथ ट्रॉफी नहीं जीता और टी20 वर्ल्ड कप इंडिया के साथ नहीं जीता, इसलिए बोलते हैं। अब I वो जस्टिफाइड है नहीं है, वो सबके ओपिनियंस रहते हैं, एवरीबडी इज एंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियन, you don't have to agree with it, I don't agree with it, but people, that's why people put that opinion because he is not one with RCB ये and he is अगला not one with कमेंट ये अगला कमेंट जबरदस्त है। नितिन भाई के जो स्पेकुलेशन से जबरदस्त है। मुस्तफा भाई, एक और बात, 2002 में वर्ल्ड कप ब्राजील जीती, 2003 में ऑस्ट्रेलिया। क्या ये टाइम फीफा वर्ल्ड कप ब्राजील जीतेंगी और अगले साल वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीतेंगी? भाई इतना इतना अगर मेरे को नॉलेज था तो भाई मैं तो बुर्ज खलीफा के अंदर रहता था, टॉप फ्लोर में इतने पैसे लगा देता था और मैं वो मतलब दुबई का शहर वो बन जाता था राजा, अगर मुझे इतना नॉलेज रहता। आई डोंट नो क्या होगा, मगर इंटरेस्टिंग फैक्ट कि अगर ऐसा हुआ तो इट विल बी लाइक 2002 2003, गुड स्टफ। पर नितिन भाई आपकी टीम तो इंग्लैंड है मेरे हिसाब से, मैं तो चिपका दे रहा हूँ आपको टीम तो maybe Harry Maguire lifting the World Cup, bro. It might just be that. You never know. You know, it's coming home. Maybe. I'm not, I honestly don't know who can win this World Cup. Anyone can win. My team is Saudi Arabia. I like Netherlands after that, but Nitin bhai, आपकी team England भी इधर in with a shout. Let's see. नहीं बिल्कुल, आई मीन ब्राजील का भी अच्छे चांसेस है, नो डाउट। उन लोगों की टीम अच्छी बैलेंस्ड है, क्या यूथ चांसेस एंड है भाई? हाँ नहीं मतलब मगर ब्राजील की ब्राजील ओवरऑल सबसे टीम अगर अपन देख entertainment ले, दे हमारे हैव हाँ यूथ एंड ओल्डर जनरेशन है, थियागो सिल्वा, कस्मीरो, अच्छे बैलेंस जबरदस्त है इन लोगों का। बट या आई मीन अगर ये ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया का मसला हो गया, हालांकि फुटबॉल वाली ऑस्ट्रेलिया तो निकल गई, बट लेट्स सी क्या होता है आगे जाके। सर भाई आप है सर, यू द बॉस। लोग बेल्जियम के लिए बोलते हैं उनकी गोल्डन जनरेशन चल रही है, मेरा मन है क्रोएशिया की गोल्डन जनरेशन है। देखो बेल्जियम का अगर आप देखें प्लेयर फॉर प्लेयर आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स है, बड़ा सा यूनिट वो नहीं खेल चुके टू एक्सपेक्टेशंस, सो इट हैज बीन वेरी डिसअपॉइंटिंग। मैं खुद बोलता था कि भाई 2015 2014 में कि आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच बेल्जियम, 2018 आई वाज वेरी एक्साइटेड। Now I wasn't as excited because I saw they weren't gelling even at their peak, and now they're getting close to towards the end. So I didn't feel that they would have anything. Croatia, yeah, man, outstanding. Luka Modric is probably one of the best footballers that I've ever seen. Top कल भी क्या top प्यारी 10 शॉट मारा। top 10 में how क्या player है भाई, underrated player. He's won Champions League. He's taken Croatia to World Cup final. For me, that's as good as Mbappe winning a World Cup because Yeah, he that 100%. I think he put Croatia on the map. Croatia को yeah. बारे में अगर कोई आजकल बात कर रहे हैं, it's only one and only reason is probably Luka Modric. Yes, Brozovic, 10 लोग और हैं उनके पास, no doubt उनके, लेकिन जो Modric एक है जबरदस्त है। पिक वन सचिन और विराट। भाई चैनल क्यों बंद करना चाह रहे भाई, अभी तो शुरू करें हम विनेश भाई, इतने सवाल पूछ, मगर आप ये सवाल पूछे, आप हमारे साथ लगातार रोज आते हैं, रोज जुड़ते हैं, तो मैं पहले फैज जवाब देंगे फिर मैं भी दूंगा जवाब। बोलो फैज, पिक वन। मिला वोट, पिक वन। देखो अलग अलग एस्पेक्ट्स इस पे, अगर मैच विनर जा रहा हूँ तो विराट, लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूंगा सचिन के वैसा कोई प्लेयर नहीं है यार। सचिन जो एरा में खेला ऑफ बॉलर्स, मेरे लिए सचिन विल ऑलवेज बी द बेस्ट। Vinesh bhai, this is going to be I think the only person who will give you an answer very straight up. I'm saying Virat Kohli. If you want me to give an explanation, I can give an explanation, but I'm saying Virat Kohli is a very tough choice. But I'm just giving an answer because मैं अगर फिर डिप्लोमेटिक है आपको मजा नहीं आएगा, तो मैं बोल रहा हूँ विराट कोहली। हम अर्जेंटीना वाले थे, बट सुनील सर बीच में आ गए आपको अरे यार सुनील भाई को सब बोल रहे थे कि भाई अर्जेंटीना नहीं जीत रहे बिकॉज सुनील भाई सपोर्ट कर रहे, मगर भाई देखो आप पहुंचे सऊदी अरेबिया से मैच पहले हारे, और मैं तो बहुत खुश था बिकॉज मैं सऊदी अरेबिया का सपोर्टर हूँ, लेकिन उसके बाद अर्जेंटीना 2 मैच जीती, फिर ऑस्ट्रेलिया को हराया, अभी वो क्वार्टर फाइनल पहुंच गए और वो हरा सकते हैं नेदरलैंड्स को। नेदरलैंड्स उतनी अच्छी फुटबॉल खेल रही नहीं, तो सुनील भाई को इतना तंग करते हैं लोग, भाई अभी तो नहीं करना चाहिए। ही इज गुड लक फॉर अर्जेंटीना। एंड रिमेंबर वन थिंग, आपके लिए स्टैट है नितिन भाई, स्पेन 2010 lost the first match to Switzerland and then they won the World Cup. I think there was another stat in 2014 Germany lost their first game, if I'm not mistaken, they won the World Cup, and now Argentina, they lost the first game, can they win the World Cup? तो आपके लिए आप खेलो स्टैट्स के साथ, आप जबरदस्त निकालते रहते। I want Portugal to play the final and win, but it's so much difficult. Yeah, I think Faz also wants Portugal. Look, there's two things. There's a section of fans who want France versus Brazil. There's a section of fans who want Portugal versus Argentina. Yeah. And then there's fans like Nitin Bhai and me who want England versus Croatia. So, different ones. Because we want Luka Modric to win and Nitin Bhai wants Harry Maguire to win. So, सर मैं बचपन से स्पेन, ब्राजील, इंग्लैंड फैन सबका, भाई क्या चॉइस है आपकी, पूरे तगड़ी टीम्स है। नितिन भाई वर्ल्ड कप है।
वर्ल्ड कप फैन है नितिन भाई एवरेज वर्ल्ड कप है, मतलब पूरे तगड़ी टीम भाई। नेक्स्ट वर्ल्ड कप से आप मेरे साथ सपोर्ट करो, सऊदी को सपोर्ट करो, मोरक्को को, नितिन फिर भाई। आप वन सपोर्ट टीम आउट करो। ऑफ दिस फोर, वन टीम आउट ऑफ दिस फोर, स्पेन, ब्राजील, इंग्लैंड, फ्रांस, अगर आपको चूज करना हो, लेट अस नो कि आप अर्जेंटीना को किसको। तो लाइक ही एक नहीं आता। एक हाँ, अर्जेंटीना आई थिंक वही सुनील भाई के पीछे छोड़ दिया उन्होंने। बट नहीं नहीं, अर्जेंटीना भी अच्छी टीम है, दे हैव लायनल मेसी। But yeah, Faz, I mean, it's been a lot of fun. Let the comments keep flowing. We'll see. We can take a few more minutes in. But your स्पेन, prediction for tomorrow. ओहो स्पेन बोल दिया नितिन भाई ने। ¿Cómo estás? भाई अगर नितिन भाई कल जुड़ना, अगर मोरक्को जीते तो कल जुड़ना। आज मैं मोरक्को को सपोर्ट कर रहा हूँ। हकीम जियाक फ्रॉम हकीम जियाक, मिस्टर अशरफी। Ashraf as well, and oh my God, I am really excited. Morata, Ferran Torres. What about David Villa? But yeah, Faz, if you want, if I get a prediction for you from tomorrow, what are you looking at? आई फील इंडिया इज गोना कम गन ब्लेजिंग। बहुत बुरा इन लोगों को महसूस हुआ होगा ओवर द लास्ट 2 days, एंड पीपल मस्ट हैव लेट देम नोन इट एज वेल। जिस तरीके से अपने फैंस है, ऑब्वियसली अपने जो भाई जुड़े हैं, या पूरे भाई दुनिया में जितने भी इंडियन फैंस है, वो मैच देख के आई थिंक हैरान हो गए। एंड आई थिंक इंडिया रियली नीड टू गिव अ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स टू लेट द पीपल नो कि भाई नहीं, वी आर हियर टू विन इट, एंड वी आर लुकिंग टुवर्ड्स द 50 ओवर वर्ल्ड कप, डिस्पाइट व्हाट रोहित शर्मा हैज सेड कि इट्स टू फार अवे। ऑब्वियसली एज अ कैप्टन उन्हें भी सोच रहा होगा, but I think India will come guns blazing, and I feel के 350 odd runs कुछ मारेंगे कल, दबा के फोड़ने वाले अपने boys. Yeah, I'm thinking a pitch. If the pitch allow, can you hear me? Yeah. Yeah, no, I don't know if the pitch will allow it, but I'm also thinking for a strong India fight back. Hopefully the likes of Rohit, Kohli, and these guys can step on the gas and score some big runs. And more than that, I feel that the bowlers, if the pitch is similar to what we saw in the last game, I just wish the bowlers in the death overs are more accurate, and the fielders don't panic. I think fielding and bowling needs to be spot on. वाकई मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ नितिन भाई। आई थिंक क्रंच सिचुएशन, क्रंच टाइम, इट्स टाइम कि अपन एक टूर्नामेंट जीते हैं, वर्ल्ड कप, या सम बिग ट्रॉफी लिफ्ट करें। आई नो कि बायलैटरल से परेशान हो गए अपन सब। होपफुली कभी ना कभी एक दिन वर्ल्ड कप, या तो क्रिकेट या तो सब, और थोड़े आगे जमाने में अगर इंडियन फुटबॉल अगर आ गई तो फिर तो अलग ही मजे होंगे। हाँ देखो, अब अगर आप लोग ऐसे फैंस है कि भाई वर्ल्ड कप हारे या जीते, आप लोग लगातार जुड़ते रहते हैं, बायलैटरल्स भी देखते हैं, पूरे क्रिकेट देखते, तो एंजॉय ईच गेम एट अ टाइम, दैट्स व्हाट आई वुड से। लाइक ऑफ कोर्स वी ऑल वांट टू विन वर्ल्ड कप, वी ऑल गेट मोर एक्साइटेड फॉर वर्ल्ड कप, लेकिन दिस इज द स्टार्ट ऑफ द क्या बोलते हैं, जर्नी टू द 2023 वर्ल्ड कप। व्हाई टाइम फ्लाइज लाइक दिस, अभी मोर देन हाफ ऑफ द फुटबॉल वर्ल्ड कप इज डन. You only have quarterfinals, semifinals, finals left after today's last game of round of 16. So, time will fly like this, and that's why the Indian team, all the teams looking at the Cricket World Cup, need to start planning from now. Facts Facto, bro. Thank you for joining us. नए दिख रहे हमारे follower, please like and subscribe, sir. हमारे भाई Facts Facto, ये सवाल का जवाब मैं दूंगा। अगर इंडिया इस बार वर्ल्ड कप नहीं जीतेगा तो रोहित शर्मा को बता दो कि हॉकी हमारा नेशनल गेम है, बिल्कुल, और एक साथ में चक दे इंडिया की डीवीडी भेज देंगे इन लोगों को। इंडिया की डीवीडी अब देखेंगे। देखो होम कंडीशंस में है, आपको इंडिया विल बी अंडर सीवियर प्रेशर, बिकॉज आप जीते तो लोग बोलते कि अरे ऐसा था वैसा था, अगर होम पे थे जीत गए, अगर हारे तो बोलेंगे कैसा हार गए। सो but the main thing is winning. You have to look at winning the trophy, and the process starts now. I think they need to blood in some youngsters and also have some senior players. First, why I said Shubman Gill at 4, because Virat Kohli, if you remember, played at 4 in 2011, and I feel Shubman Gill, passing on the baton. Let Kohli played at 3, Shubman at 4, like Sachin and Kohli batted together in that World Cup. Hopefully, we get to see that. And I want one aggressive opener with Rohit Sharma, so that's why I was picking for 3. बिल्कुल सर, सब लोग बोल रहे हैं नहीं वर्ल्ड कप फाइनल बेस्ट है, बस इस दिन वर्ल्ड कप फाइनल हुआ, उसी दिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान करवा दो, वर्ल्ड कप से ज्यादा इंडिया पाकिस्तान में होता। बताओ सर, आई एम राइट और रॉन्ग? बिल्कुल नहीं, यू आर राइट, या 100% वही बोले कि अगर वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल जिस दिन है, उस दिन इंडिया पाकिस्तान का अगर आप फाइनल डाल दो तो वो इंडिया पाकिस्तान में होगी, बट लाइक वो भीड़ ज्यादा इंडिया पाकिस्तान की व्यूअरशिप में होगी। आई थिंक देयर वाज अ स्टैट आल्सो विद रिगार्ड्स टू दिस, आई थिंक आई सेंट इट टू यू अ फ्यू डेज अगो, मुस्तफा, इफ यू रिमेंबर, कि इंडिया पाकिस्तान की व्यूअरशिप क्या लेवल तक जा सकती है। But that's actually a tough one, because I agree with the Premier League match and India Pakistan, but if you put a World Cup final, Brazil Argentina, and you put India versus Pakistan, I think the football one weighs heavier, bro, because you're going to have people from South America watching the football. You're going to have from Europe.
I know Indian Pakistanis are everywhere, but if you just look at it, you'll have everyone, Messi versus Ronaldo, Kohli versus Babar. But I just feel that the Messi Ronaldo edges it because, yes, India has a huge population of 1 billion people, but if you just look at it, football is a more global sport. So if I take Yeah, it I that mean, way, I don't know. कैसा अगर तोल रहा हूँ मैं इसको, बस sorry, yeah, मैं yeah. बस वैसा बोल रहा हूँ. I'm not saying कि इंडिया पाकिस्तान बड़ा गेम नहीं है. I'm just looking at it like from that point of view. मैं कैसा कैलकुलेट करूँ, यस 100 ऑड कंट्रीज है इंडिया पाकिस्तान, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान या हर कंट्री में, तो आई मीन यस इट विल बी नॉट अ वेरी क्लोज बैटल मे बी, बट लाइक आई वुड से 19-20 नहीं, मोर लाइक 17-20, 16-20, यू नो. सर क्या आप हॉकी भी फॉलो करते हो? देखो मैं ओलंपिक्स में कर रहा था, आई बी ऑनेस्ट विद यू, मगर नहीं मैं वैसा नहीं करता हूँ हॉकी फॉलो, मगर वो भी शुरू करेंगे. मैं बास्केटबॉल फॉलो करता हूँ क्लोजली, फुटबॉल करता हूँ, क्रिकेट करता हूँ और टेनिस का थोड़ी बहुत नॉलेज है, मगर सबसे ज्यादा क्रिकेट फुटबॉल है और फिर बास्केटबॉल की नॉलेज है बिकॉज कनाडा में रह चुका हूँ तो गेम्स अटेंड किया वहां पे. तो फैज आप कौन से स्पोर्ट्स फॉलो करते हैं हमारे दर्शक अच्छा, के लिए? क्रिकेट के वर्ल्ड कप के दिन बोल रहे हैं नितिन जी, सॉरी. मैं फुटबॉल क्रिकेट के अलावा तो ज्यादा नहीं देखता, यूएफसी देखता हूँ थोड़ा बहुत. यू नो लड़ने का शौक नहीं है, बस देखने देखने का शौक है. और या उसके अलावा बस जिम 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 करते हैं बचपन बस. में आई वाज अ ह्यूज फैन ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई. आफ्टर द रॉक लेफ्ट आई आल्सो लेफ्ट, WWF, बट yes. उसके बाद तो आई थिंक वो एक अलग ही चैनल शुरू कर देना पड़ेगा, WWF की यादें अगर हम that was like nothing got me more excited than that. The Rock coming into the break, he ये like the नितिन जी SmackDown. इस यू नो शेडिंग लाइट, ही सेइंग कि अगर क्रिकेट वर्ल्ड कप के दिन आप इंडिया पाकिस्तान को हरा दो में ज्यादा आएंगे. सो इफ इट वाज अ क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल एंड यू हैड इंडिया पाकिस्तान प्लेइंग इन दैट क्रिकेट फाइनल, नॉट फुटबॉल, देन कैसा होगा? Yeah, of course. जब तो पूरी दुनिया ही जाती भाई, सब देखेंगे. आजकल अर्जेंटीना में भी बांग्लादेश के फैंस से देख रहे. There's like a link over there because there's a lot of Bangladesh fans supporting Messi and Argentina. And when they beat India, the Argentinian fans reciprocated and they also celebrated for Bangladesh. They had their flags and stuff. So वो अभी कुछ चल रहा. But yeah, man, India Pakistan का मैच तो भाई ये crazy नितिन रहता भाई, हर वक्त. जॉन सीना कैन सी मी बोल रहे, जॉन सीना. कौन सी ना? मुस्तफा सर, फैसर इंस्टा बताइए. मेरा इंस्टा फैज डॉट ताहिर है, मुस्तफा का है मुस्तफा डॉट इस्माइल. Musty Machine. You can find me at Musty Machine. दोनों के फोटो में लगे You're हुए हैं. sliding into my DMs, bro. You're sliding into my DMs. But yeah, Faiz, anything else you wanted to add? It's been a lot of fun. बहुत मजा आया. Thank you so much to Facto for making a debut. Nitin bhai also, I think, making a debut. I didn't realize. Yes. Cricket Titan, Rajiv, Rahiv Jha, all of these people Yeah, who came on and today and then our regular, yeah. फ्री टाउस और क्या बोलते सो हमारे जो विनेश भाई है, दोनों तो आते रहते हैं, तो विनेश भाई को देखे तो बहुत ज्यादा खुशी हो गई. मिसिंग चिराग भाई टुडे एंड गुरनूर भाई, बट होपफुली दे कैन वॉच द रिप्ले एंड Nitin bhai ke facts I will not forget. Nitin bhai's facts and I hope he comes with more interesting conversations. जबरदस्त सीखने को मिला आज काफी कुछ. कमेंट से ज्यादा कुछ सीखे आज एंड होपफुली आप लोग कंटिन्यू करिए. प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए. फुटबॉल का भी चैनल है हम लोग का, चेसिंग ग्रीन एरोज. ये क्रिकेट वाला है चेसिंग द टारगेट, जिसपे फुटबॉल की भी बात हो जाती है. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. लास्ट फ्यू कमेंट्स ले लो फर्स्ट. एक मिनट. मतलब सर मैं ऋषिकेश धुन से हूँ, बट मेसी सर का फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है. बहुत ज्यादा है. आई एम श्योर. देखो मेसी का तो फैन फॉलोइंग हर जगह है. एंड आई टेल यू समथिंग, अगर आप देखें सऊदी फैंस में भी बहुत मजाक उड़ाई मेसी के जब जीते, वेयर इज मेसी, वो तो नोक जोक तो होते रहता. बट एक्चुअली इवन इन द मिडिल ईस्ट मेसी इज अ ह्यूज आइकॉन, ह्यूज. व्हेन ही केम टू प्ले फॉर अर्जेंटीना over there, people went crazy. So Messi is like, man, that guy is worldwide. Messi, Ronaldo, I don't get into that debate. I was United fan, so Ronaldo is always that guy for me. But I like different kind of players. Like Modric is the type of player that I like. My favorite, Messi, Kane, Williamson, Sachin, सब एक तरह की पर्सनैलिटी है. क्या बात है, आप भी अलग तरह की पर्सनैलिटी है, मगर आप चार चांद लगा दे. आज आपके कमेंट्स बहुत अच्छे थे, सवाल भी अच्छे थे, स्टैट्स तो बेहतरीन. मतलब वो शादी का जो स्टैट था मैं कभी सुना नहीं. तो कीप इट अप. एंड जो भी आप लोगों को लाइक और कुछ भी है, लाइक अपने हमारा जो ट्विटर है चेसिंग द टारगेट और इंस्टाग्राम चेसिंग द टारगेट, वहां पे आप मैसेज करिए हम दोनों को, हम दोनों रिप्लाई करेंगे. वी यूज दैट अकाउंट क्वाइट अ बिट. तो
chasing dot the target fest on Instagram and chasing the target on Twitter. ये जो आपको दिखता हमारा जो logo है, you'll find that the purple logo on both the social medias. You can ask us questions over there. You can give us your thoughts. You can talk cricket, football, wrestling, food, whatever you want. But also, if you have any ideas for the show and stuff, it will be great. And हम जुड़ेंगे. We will try to get you guys on as well. We'd love to talk to the fans. It will be a lot of fun. मैं भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनने की कोशिश करूँ भाई. ऑल द बेस्ट. बस एक ही एडवाइस देता हूँ कि लगे रहो, गिव अप मत करो, पेशेंस, सब्र रखो एंड ऑलवेज ट्राई टू रीड. दैट्स द बेस्ट थिंग आई कैन टेल यू. पढ़ते रहो. आप जो भी ऐसा कभी खाली हाथ मत बैठो, पढ़ते रहो आर्टिकल्स एंड स्टफ. It'll always help. It doesn't always have to be about sports. Sometimes it can be about something that you like movies. मैं बॉलीवुड का शौकीन हूँ, मैं बिग बॉस भी देखता हूँ. You can watch, read articles because the thing is, vocabulary आपकी ऐसी बढ़ती है. आप अगर पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें, आप बुक्स पढ़े लाइक स्पोर्ट्स के भी और दूसरे बुक्स भी, हैरी पॉटर भी उठा लो, आपका वोकैबुलरी बढ़ता है. सो ऑलवेज रीड इन दिस फील्ड. मुस्तफा सर, आपसे तो वर्ल्ड कप में मिल ही लूंगा मैं. भाई आ जाओ सर, आ जाओ, मिलेंगे. होपफुली इट विल बी अ लॉट ऑफ फन. And Faiz, also Faiz, thank you so much, man. You've been great over the last few months, providing a lot of good knowledge. And who would have thought you would be discussing India Bangladesh? I know that you've been into football recently, but your cricket knowledge is back and running, and you bring a funny side to things. And thank you so much. It's been a lot of fun. I think the best note that we can end on is like you just rightfully said to Nitin, but I think that implements to all of us. Efforts are non-negotiable. बिना effort के कुछ काम बनेगा नहीं. Just be patient. Put in the efforts. Same thing to India. Just put in the efforts. Be patient. And don't be too hard on yourself. Enjoy life. Don't be too hard on yourself. Yes. And love thy neighbor. Love thy neighbor. Thank you. Thank you so much, man. Guys. आप आओगे इंडिया, इंशाल्लाह आएंगे भाई. इंडिया डेफिनेटली नितिन सर आएंगे, हम लोग इनको लेके आऊंगा मैं. हम इंशाल्लाह आईपीएल का भी ट्राई करेंगे हम. उससे पहले इंडिया ऑस्ट्रेलिया का सीरीज है, तो मैं सोच रहा हूँ फैज को जब भी भेज दूं, और इंशाल्लाह करेंगे कुछ वहां पे भी. और प्लीज आपके फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए. एंड वहाँ पे स्पोर्ट्स यारी को भी अपना प्यार दिखाइए. वो लोग भाई सुबह शाम शो करते, मतलब दे डोंट मिस a beat. We're also trying our best, and we're all one family. So make sure you come on all our channels and give your opinions. We don't have to agree, but always love to hear your opinion. Thank you guys so much for today. We really appreciate it. Thank you so much, guys, for co-hosting this with me. And I will Ronaldo, inshallah. Yes, tomorrow we will discuss that, and we will discuss the India versus Bangladesh match. Match के बाद जुड़ेंगे कल. Thank you so much, guys. Have a good day. Take care.